Good evening, everyone. Today is day 8 of our Power BI session, and we are going to conclude this HR analytical dashboard, which we are doing from last 2 3 days. Okay, it's almost done, and we have to now create some more charts in it. And basically, I had given this as an assignment, but let me complete it. This is the bar chart that we are going to do. And let me just open the the dashboard that we were creating. Okay, so we have to take here, I guess, attrition by salary slab. So, so we will take the salary slab on the x-axis, on the y-axis, and the attrition count on the x-axis. So I'll say salary slab on the y-axis, and on the x-axis we are going to take the attrition in number, attrition count. So we got these bar, okay, and up to 5K, the people who are getting up to 5K only, they are the one who are living more than 5 to 10K, 10 to 15, and 15 plus. They are staying with the company. So the thing is that if you pay more, people will stay. If you don't pay more, people will go. Now, what we will do is we will click on the format painter and we will paint the put that this thing over here format, and I want it to be different color. So what we will do in the legend also, we will add the salary slab. I think we lost the connection. I'm connecting again. Hope my screen is visible to all. Yes. Okay. So I was saying that when we have added the legends, what has happened? The size of the bar has reduced. Okay. So I'm showing again, when we add the salary slab, the bar is becoming thin. Is it happening with everyone? Those who are doing along with me? Has it happened with you also? Sir, can you please repeat so that I we missed you because of the network? Okay. So what I was doing is, I'll just start again. We are creating the next bar chart, which is the attrition by salary slab. So on the y-axis, I am taking the salary slab. Okay, so salary slab on the y-axis, and we are taking the attrition count on the x-axis. Okay, now you see the size of the bar is thick. Am I right? Yes, But the color is same. correct. To change the color, I am putting the salary slab again into the legend. But as I do so, what has happened? The size of the bar has become small. Small. Yes. One reason that I can see is that because the heading has also come, attrition count by salary slab 2 times. So I will just change this heading. Now you will see little bit the bar, still the bar length is very thin. So what we can do is we can go to the format. We'll click on the visual first, go to the format, and this is y axis, and maximum width, we can increase the width. Spite of increasing the width, I'm not able to see the change. X-axis bars. Okay, transparency. Space between series. Let's reduce the space. Space between categories.
Okay, so what we can do is, I will suggest a better way. So we'll remove the legend, okay, and now we will change the color of the bars by going to the bar and the color you will change from here. Okay, but now we will do category by category. So up to 5,000, you can choose a different color. Okay, then for the next category, you can select a different color. So one by one, you have to do. Then your bar size will also remain same, and your this thing will also not decrease. Have you understood this thing, everyone? Yes. Makes sense. ठीक है? If you want to add border, you can add border. If you want to add data labels, you can put down the data label. Data label is always good because you can see the numbers. And what was the last this thing? So the next last one was the attrition by job role. Okay, so we'll select the job role here in the last one. Job role. Y-axis we put job role. And on the x-axis we will put attrition count. Attrition count by job role. Now the heading is okay, but the x-axis, this values, the color is not visible, so we'll make it white. Sorry, y-axis. If I make a mistake, you all please correct me, huh? I am only correcting myself. I want you all to correct me when I make any mistake. Is it clear to everyone? सर ये वैल्यू आया नहीं। कौन सा वैल्यू? डेटा इस लेबल नहीं आया। डेटा लेबल को मैंने ऑन हाँ नहीं करा, अब ऑन कर रहा हूँ। अब आ गया। हाँ हम्म। हाँ। और ये कलर भी हम चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए एक बार लेजेंड में ही ऐड करके देखते हैं। छोटा होगा फिर देखेंगे। तो जॉब रोल, हाँ यही प्रॉब्लम है, लेजेंड में आप डाल देते हैं ना तो ये पतलू हो जाता है, बट ठीक है। इज इट सर वन क्लियर? क्वेश्चन हियर, नीचे जो ये सम ऑफ एट्रिशन वो करके लिखा हुआ है ना, हाँ 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 काउंट, हाँ हाँ, वो हटा दे। ये नहीं, वो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब भी ऐड करते हैं जैसे सम, ये दैट इज डेफिनेटली टेकिंग टेकिंग फ्रॉम सम डेटा दैट वी आर एडिंग, राइट? तो उसका नाम नहीं चेंज कर पाते हैं क्या? कौन सा? ये हाँ कर सकते हैं ना। सी व्हाट हैपेंस इज, सी वॉट एवर वी आर पुटिंग इन द एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस दैट विल कम एज हेडिंग ओवर देयर, राइट? तो हाँ। इसका नाम चेंज करने के लिए यू हैव टू राइट क्लिक एंड यू हैव टू रीनेम फॉर दिस विजुअल। Then in this box, you can remove the sum of. Okay. So although it is ओके। not visible now, what I'll do is I'll change the color of this x-axis and I'll make it white. So now you will be able to see this. I had already done that, but I don't know why it is not coming. ये शायद उसके जो उसका पैरामीटर्स है उसका चेंज हो रहा है। हाँ, ये 050 का हो रहा है। आई वॉन्ट टू डू फॉर द लेजेंड।
सो वेयर इज दैट, टाइटल में होगा शायद। टाइटल होगा क्या? हाँ टाइटल है, टाइटल है, इसको वाइट कर देते हैं। करेक्ट। ओके, सो दिस एट्रिशन काउंट हैज कम। सर एक मिनट ऊपर I'll आएंगे? apply to the previous two also. So we'll click on format printer, do this here, do this। इसका वाइट नहीं हुआ लेकिन यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे एंड इन द वाई एक्सिस यू डू इट वाइट। वाई एक्सिस टाइटल को वाइट कर देते हैं। अच्छा ये तो एक्स एक्सिस है ना। Okay, so we had done with the dashboard. Only one thing, that is this one is not coming in the proper format. So we will click on this visual and we have to remove the background. So background is in the size and style. Turn off the background. अभी भी कुछ और चेंज करना पड़ेगा इस पे। This is a matrix. Okay. Now to do that, column headers. Want the background to come in this table, but somehow it is coming. So, बैकग्राउंड में नहीं जाना है क्या? नहीं बैकग्राउंड करने से नहीं गया, कुछ और करना पड़ेगा। बट जाता है इसका भी, वी नीड टू एक्सप्लोर। इफ somebody is able to explore, let me know। बैंडेड रो को ऑफ कर देते हैं, हाँ तो यहाँ से कुछ होगा। इसका कलर वाइट है एंड आइकन्स। यू कैन पुट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे हम एक्सेल में करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे सेल एलिमेंट्स में जाके यू कैन ऐड दिस एंड यू कैन राइट अ फंक्शन ऑल्सो फॉर दैट। तो दिस is a new thing for everyone. Okay, so suppose I want to highlight where the job role satisfaction is more, so I can put the lowest value and highest value and what color I want to put. Suppose I want to put this dark color and this light color, so I can decide this and then sum of employee count basis what you want to do, and then lowest value and highest value. See, instead of this, you can see put a custom value also. Let's say 40 is this, and highest value also you can put 100 and then click on OK. So accordingly, those values who are near to 100, they will be darker in shade. Those who are lighter, they will be lighter in shade, like that. So we can do this way also. Okay, and But sir, how it will come? see, what I have done is Cell in the cell elements, there is a field called as background color. So I put it on. Now, what it has done, it has given some background color in all the cells.
Now you will see a gradient, a dark shade and a light shade. The darkest shade is coming on the highest number, and the lightest shade is coming on the lowest number. So we can define how the numbers will be decided. So you can click on fx. Fx is a function. So here we are using gradient. You can use rules or field value. So let us rate gradient is okay. Employee count summation, okay. And lowest value. Now, so I'm just changing this color pattern. Okay, so I want to have this color, and for the highest value, I want to have a darkest color like this. And now I can click on OK, and the shades will change. What, what, from where you have done this? Uh, in From the format, in the format, okay. when you scroll down, there is a long list in the format of this card. Hmm. So you will see a Active. cell element in the list. A cell element will be there, and in the cell element, this background color you have to put it on, and then we Oh, have to write this function. oh, FX function. Yeah. Okay. If you want to add a middle color also, we can add a middle color also like this. So like this, it can become. So it's like that. I mean, yes. So different. So this is how we finished with our first dashboard of HR analytics, and it is functioning properly. Okay, and this is just a beginning, guys. This is not everything which is there, but yes, something you have learned. Now, if you have any questions, okay, Sir, I can take up your questions, and sir, one question. yes. Uh, 1 minute. Can I share my screen because I am struggling with something? Okay, sure. Let me stop sharing. Uh, This Power BI file, I you want me to share in the group, everyone? will you please? Okay. Am I able to share my screen? Yes, you are. Here the heading is sum of attrition count. Okay, Huh. and I think because of that, if I am making it, this is small. Yes. Then also it Okay, is not happening. Yes. So what now you do is, it huh, is not showing the number. exactly. Okay, Yes. I Yes. have to make it bigger. So if I want to reduce that, what should I do? Now what you do is you double click on the header, the sum, double click on this. Correct. Okay. Now, Not able to change the name. yeah. Now you see the in the columns. Yeah, here. Right click on this, and the second option, rename for this visual, Rename for this visual. and remove the sum of, and maybe attrition. You can just say A double T. You can still reduce this. Huh. Yes. Now see. Okay. Otherwise, what I mean to say, when it was before that, in Hmm. fact, if I am putting the this center also, it is not coming. Why? No, that should not have happened. If you, no, how can you do it again? Okay. Like I what? am doing Control Z. Yes. Okay. Now I'm here. Hmm. Okay. And if I am doing Alignment, you have to do center of the values. where it gone? Click So on the card again. Click on the card. The card got deselected. yes. So Now in the here. value, no, not like this. Okay. This is the call out value. Whatever is there inside the table is a call out value. Okay. So you have to So realign. You have to do the alignment for the call out value. how So the values is there. Value. values या here? या गो ये वाला डाउन, ना? या यही Okay. वाला, हाँ, नीचे आइए। जी। अब इसमें ऑप्शन है क्या अलाइनमेंट का, पहले ये देखना पड़ेगा, अगर नहीं है नहीं है। तो फिर हाँ, तो फिर नहीं हो सकता, ओके। है ना। दैट इज द ओनली, दैट इज द वे। नाउ वो जो अलाइनमेंट आप कर रहे थे, दैट वाज ऑफ द टेबल। अच्छा।
हाँ, that was not of that particular column. Can you go to specific column? यहाँ पे एक ऑप्शन है column headers, उसके नीचे specific column. Yeah. Now here also we don't have any alignment option, correct? हम्म। जब तक वो alignment option नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते हम। ओके। और इसमें कलर, अच्छा कलर हाँ, यहाँ अच्छा से चेंज हो alignment सकता? है, नीचे है, देखिए। कहाँ पे, ये वाला? हाँ, इस पे क्लिक करिए। तो ये व्हाट करके देखा, सिर्फ वो जेंडर में जो आ रहा है जेंडर ना, कर ये रहा है, हो रहा ठीक है। तो वो स्पेसिफिक कॉलम में जेंडर सीरीज सेलेक्ट करेगा ना, क्लिक ऑन द जेंडर एंड सेलेक्ट द वैल्यूज। हाँ, नाउ क्लिक ऑन अलाइनमेंट। यस। है। एंड सिमिलरली टोटल भी होगा, अप्लाई टू, हाँ, तो अप्लाई अप्लाई टू टू टोटल भी टोटल। कर दीजिए ऐड, ओके। तो हो जाएगा। इसका कलर अब यहाँ से चेंज हो जाएगा ना, बैकग्राउंड कलर और ये? हाँ, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। बट मैं चाह रहा था बैकग्राउंड कलर आए ही ना, वो नहीं मिल रहा है मुझे ऑप्शन। आई विल लुक फॉर दैट टू नाइट, बट आई एम नॉट एबल टू स्टिल फाइंड आउट कि इफ यू डोंट वांट एनी बैकग्राउंड एंड यू वांट इट टू बी मर्ज विद द बैकग्राउंड ऑफ द बैकग्राउंड, देन दैट हाँ। शुड हैपन। हाँ मतलब जीरो वो हो जाए, हाँ, मतलब जीरो हो जाए, हाँ करेक्ट। ओके। इसमें नहीं है और क्या, नहीं होगा। तो मेनली यही था मुझे। यस। हाँ, ओके, थैंक यू। फाइन। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन? So, can I expect that you all will be able to complete the HR analytic dashboard by Monday? Tomorrow, Saturday, and day after tomorrow, Sunday. Both days are holidays. I will not be taking any class tomorrow. वैसे भी Saturday, Sunday is declared holidays, but yeah, but I'm just reminding you that you have 2 days off, but हम्म। you should give time in completing this dashboard at least and revise it, so that when we start on Monday we will start with what we call it as Monday we will start with Power Query. Okay, and I'm going to cover a very important aspect, so don't miss the class. मुर्तुजा सर, आप गायब हो गए थे बीच में। Yeah, actually, difficult to catch up means with the timings. I'm having I some other understand. commitments. Yes, but still, whenever you can come, and if you are not able to join in live, then if you can see the recordings, then you will be able to follow up, sir. Yeah, right, right. You use backlog for seeing the recordings as well. Already accumulated. Trying to catch up. Yes. Yeah, so Saturday, Sunday, if you can get up sometime, okay, so do that. Yeah, yeah. Yes, I'll try. Yes. Thank you. Yeah, yeah. And see, for Monday we are going to take a very bulky dashboard, okay, which I will share on Sunday afternoon in the group, okay, what we are going to do. But it will take 1 week to create that dashboard. So you are going to learn a lot of things, lot of DAX and all these things. So we will take a very bulky this thing, and then from the next last week of the course, we will do a financial dashboard that will be P&L balance sheet of a company. So don't miss any sessions and practice. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आगे वाले मंडे से यू विल बी फीलिंग कि कुछ गैप आ रहा है। अभी तक तो मजा आ रहा है, फिर वो हनीमून पीरियड इज ओवर नाउ। Yes, so I would say that so far it was so good, so nice, everything is okay. But now, you when once we start Power Query, you will start feeling the push. ठीक है, so before that time comes, उससे पहले if you are able to do, then definitely वो कर लेना, ठीक है। सर। Sure, sure. Thank you. Okay, so सर, can we, yes, some सर, you were saying actually, I asked you that one, no, importing and exporting. अच्छा, हाँ ठीक है, तो लेट मी टेक अप दैट। सो एवरीवन डोंट लीव नाउ, 5 minutes I'll take, and I'll take up that query of this thing, Kamal, and it will be helpful for everyone to understand what we have to do. Okay, so let me open Excel for that, because Power Query is basically Excel oriented thing. Or let me open Power BI only, no problem. Now see, what we will do is we have the data in this table. Now I want to add some color, I want to do some changes. I'll go to transform data. And when I click on transform data, I am redirected to which application? Power query. Power Query. Okay. Now if you see that,
Now what it is giving me an error. Okay, what error it is giving? चेंज See, ही नहीं आया। user admin desktop HR analytics file is सर not found. सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपका स्क्रीन चेंज नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, सॉरी। ओके ओके। हाँ, अभी अभी हो गया। हम्म। So it is giving me an error that the file is not found. Then the possible reason is that कि I have changed the name of the file. ये देखिए, ये जो है मैंने 14 जनवरी को ये स्टार्ट किया था, अब इसका नाम 16 जनवरी कर दिया। एक्सेल का भी नाम चेंज कर दिया। ठीक है, एक्सेल का नेम है 16 जैन। इफ यू कैन यू सी माई एंटायर स्क्रीन नाउ? यस। Yes, sir. And I did the same project with the TRL team also. See what I've written, HR Analytic Dashboard, TRL. So what I'm teaching is I'm teaching in the corporate also. Okay, so you are learning the same thing that corporate people learn in a corporate training. Okay, so this training is equivalent to a corporate training. Okay, चलिए। So now what I need to do is, and what I was telling Kamal also, कि let me just see कि where I've saved this. So इसको डेस्कटॉप पे किया होगा मैंने सेव। हाँ, it is in desktop। ठीक है। Now since the file name is changed, okay, so how come we are still able to build the dashboard and see the things? Because the data was already stored at the back end. Now when I wanted to change something in data, then उसको याद आ रही है ये data तो हमारे पास है ही नहीं। So what we will सर do is we will go सॉरी to, सॉरी, सर sorry, सॉरी सॉरी सर, yeah, अभी एक्चुअली आपका स्क्रीन चेंज नहीं हुआ था ना, तो आपने ऐसा क्या किया था जब ये एरर आई थी? अच्छा चलो, अभी मैं फिर से रिकैप दिखा देता हूँ एक हाँ बार। हाँ। इसको बंद करना पड़ेगा उसके लिए। सी व्हाट आई डन इज, वी आर ऑन द पावर बीआई राइट नाउ, करेक्ट? करेक्ट। नाउ आई वांट टू गो टू द डेटा सोर्स, एक्सेल वाला डेटा इसका, ठीक है? सो आई एम यस। क्लिकिंग ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी विंडोज ओपन। अच्छा, ऑटोमेटिकली, और ठीक। जनरली क्या होता है कि ये विंडो में शीट दिख जाता है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा, अभी एक एरर दिख रहा है। ओके। ठीक है, और एरर क्या बोल रहा है? डेटा सोर्स एरर, मतलब इट इज नॉट एबल टू फाइंड द डेटा सोर्स। नाउ व्हाट शुड आई डू? आई विल गो टू द सोर्स, I'll go to the edit settings. Okay, now in the edit setting, what it will say, it will say कि भैया where is the data, help us with the data. So I'll go to browse, and then I'll show him, okay, this is the data. Okay, I'll go to my desktop and I'll select the file which is the data. Now I'll click on open. Now when I give him the right, give it the right data source, it will open this file. सर ऐसा मेरे साथ हुआ, तो मैंने जो ये आपके राइट हैंड साइड में चेंज टाइप आ रखा है ना, हाँ, उसको क्रॉस कर दिया तो मेरा ओपन हो गया, नीचे वाला, लास्ट वाला। यहाँ वाला ना, हाँ। हाँ, वो आपके उससे मेरा साथ आ गया। में हो गया होगा, लेकिन यहाँ नहीं होता, बिकॉज मैंने तो अच्छा। फाइल नेम ही चेंज कर दिया ना, आपने वो नहीं किया होगा, ओके ओके। है ना, इसलिए। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड इज, व्हेन आई हैव गिवन द डेटा सोर्स, इट इज गिविंग मी दैट दीज मेनी टेबल्स, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय मास्टर, ये कंबाइंड डेटा, ये सब एक्स्ट्रा फाइल्स मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, हम्म। करेक्ट? हम्म। बट आई डोंट वांट टू इंपोर्ट दीज एक्स्ट्रा फाइल्स इन माय दिस पावर क्वेरी और द डेटा सेट। मुझे ये दो फाइल्स ही चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल और एम्प्लॉय मास्टर, करेक्ट? सो आई हम्म। क्लिक ऑन दिस टेबल। So do you want to create a navigation step that replaces the subsequent steps? And now see what is happening is there are subsequent steps which are there, but I've changed the data source. I've come to step number one. So whatever I do, it will give me an error. It will give me a warning. So what I'll do is I'll remove all these steps. Now I am on step number one, correct? Now what I want is I want to open this table. I'll click on this table and this table is open. Okay, but now do you see something unusual? And I want everyone to answer. आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। हेडर रिमूव हो गया सर। हाँ, क्या हो गया? एरर रिमूव हो हेडर, गया। हाँ, वो तो हो गया। अभी हेडर। इस अभी जो डेटा दिख रहा है उसमें क्या गलती, क्या गड़बड़ है, बताइए। नहीं व्हाट इज सर, द, उसका हेडर, हेडर नहीं आ रहा है, हेडर। मुझे कॉलम हेडर के अंदर टेक्स्ट और न्यूमेरिकल दोनों ही आ रहा है। हाँ हाँ, ये वन टू देखिए, थ्री आ रहा है। ये 1 2 3 4 आ रहा है। दूसरा हाँ ये जो कॉलम है, कॉलम हेडर्स आर नॉट प्रॉपर। ओके, हाँ, तो कॉलम हेडर्स।
Correct. So why it has happened? Because when I was teaching them in this Excel, this sheet, I had added one row and I had showed them one formula जिसमें 1 2 3 4 कॉलम से कॉलम नंबर आ जाता है, ठीक है। बट दिस आई डोंट वांट इन माय पावर क्वेरी, मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। नाउ हाउ डू आई रिमूव द फर्स्ट रो? देखिए आपको रिमूव रो का ऑप्शन दिख रहा है। हम्म। तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल से रिमूव टॉप रोज। नाउ यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज आपके डेटा में एरर नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि हमारे में तो नहीं है आप में है। तो जस्ट लर्न, है ना, डोंट हैव टू डू, बट यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग। सो विल से रिमूव टॉप रो एंड आई विल रिमूव द फर्स्ट रो बिकॉज आई डोंट वांट द फर्स्ट रो। नाउ दिस बिकम्स माय फर्स्ट रो बट इट इज स्टिल नॉट द हेडर। तो अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। हाँ या ना? यस यस। Yes, yes. सो क्लिक ऑन दिस। नाउ इज एवरीथिंग परफेक्ट? करेक्ट। अब ठीक है? Hmm. ठीक है, चलिए। यस। तो एम्प्लॉय मास्टर वाला टेबल ठीक हो गया। अभी एम्प्लॉय डिटेल वाली टेबल पे आते हैं। अगेन इट इज शोइंग कि इसको ये फाइल भी नहीं मिली, कोई बात नहीं, गो टू एरर अगेन। नाउ क्लिक डिलीट ऑल देयर स्टेप्स। नाउ वील कम टू द सोर्स, वील कम क्लिक ऑन एडिट सेटिंग्स, वी विल अगेन सेलेक्ट द सेम फाइल एंड क्लिक ऑन ओके ओपन। ठीक है, अभी एम्प्लॉय डिटेल वाली टेबल को लोड करते हैं। लेट्स लोड दिस टेबल, क्लिक ऑन दिस टेबल। इसमें भी वही दिक्कत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वापस से सेम थिंग आई विल रिपीट। रिमूव रोज, टॉप रोज, Remove. रो नंबर 1, एंड देन यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो ये भी वैसा ही बन गया पहले जैसा, ठीक है। अभी एम्प्लॉय मास्टर आ गया हमारे पास और एम्प्लॉय डिटेल आ गया। बट मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। एम्प्लॉय मास्टर में भी सेम चीज दिखा रहा है कॉलम, और एम्प्लॉय डिटेल में भी सेम कॉलम दिखा रहा है। डिड यू ऑब्जर्व दैट? हम्म। हम्म। सैलरी हाइक, सैलरी हाइक। हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, नाउ लेट मी डू लेट मी डू वन थिंग, गो टू से सोर्स अगेन। नाउ दिस, नाउ व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज कम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अलग अलग थे दोनों में डेटा। एम्प्लॉय सर मास्टर, आपकी फाइल में बहुत सारी फाइल्स और आ गई हैं शायद हाँ वो इस। मैंने एक्स्ट्रा, ये रहा, नाउ इट इज करेक्ट, नाउ दिस इज द करेक्ट डेटा, सो आई रिमूव द फर्स्ट 2 रोज। वो अच्छा। मैंने आज इनको बहुत सारी चीजें बताई थी तो उसमें सब इंक्लूड हो गया। एंड आई डिड नॉट क्रिएट अ कॉपी, एक्चुअली आई शुड हैव डन दैट। चलिए, अब दिस डेटा इज फाइन, अब एम्प्लॉय डेटा डिटेल भी ठीक है। सर ये कैसे आया? ये कौन सा? सी, एम्प्लॉय मास्टर इज दिस, एम्प्लॉय डिटेल इज this. I went to the data source and I हाँ। selected this, then it came. नहीं एक्चुअली उस टाइम नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। ये थोड़ा पूछ रहा हूँ कि भाई कुछ फाइल चेंज वो हो गई कुछ क्या? नहीं, नहीं, वो इसका इंटरनल एरर होगा पावर क्वेरी का, ओके उसने ओके। अपडेट अपडेट नहीं किया। नाउ द थिंग्स आर करेक्ट, आई विल से क्लोज एंड अप्लाई। नाउ सपोज आई वांट दिस एक्सेल, मतलब आपका जो क्वेश्चन था वो ये था, यस। I want to have this Excel, okay? So what I will do is, what we can do is, what you can do is, you can go to source, okay? Now Excel is closed or not? Yes. We can go to source and we can copy this URL, मतलब एड्रेस पाथ, है ना, एक्सेप्ट द इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाला जितना भी है वो सब आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया, हम्म। कंट्रोल आर करेंगे तो ये रन विंडो खुलता है। इट इज अ डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन पेस्ट दिस कोड, ठीक है। यस। एंड विल क्लिक ऑन ओके। अच्छा। हाँ, तो ये वो वाली फाइल ओपन कर देगा, लेकिन ये वो वाली फाइल ओपन करेगा जो ओरिजिनल होगी, ठीक है। हम्म। ओरिजिनल वाली फाइल ओपन कर देगा। हम्म। बट हमें तो अपडेटेड वाला फाइल चाहिए जो हाँ। चेंज कर दिया है हमने। आर यू गेटिंग इट? यस। है ना? सो इन दैट केस सिंस वी हैव नॉट डन द चेंजेस ओवर हियर, तो वो वाला फाइल आपको एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू से close and apply. When you say close and apply, it will automatically go to power
BI only because the source was Power BI. Are you getting it? सोर्स वाज पावर बीआई। भाई पावर बीआई में मैंने डेटा लोड करा, एक्सेल करेक्ट। वाला। हाँ। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं एडिट ट्रांसफॉर्म पावर वाले पे क्वेरी क्या। गया ऑप्शन, ठीक है, हाँ। पावर क्वेरी पे चला गया। तो हम्म। पावर क्वेरी को डेटा किससे मिला? पावर बीआई से मिला, ना कि एक्सेल से। करेक्ट। तो पावर हाँ। बीआई वापस डेटा हाँ। किसको लौटाएगा? करेक्ट करेक्ट। पावर बीआई को लौटाएगा ना, पावर क्वेरी। हाँ, तो पावर बीआई से आपको निकालना पड़ेगा फिर, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका था ना कि डेटा मिल जाएगा क्या, मतलब, तो वो नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? यू विल लोड दिस डेटा, मतलब ये हमारा डेटा यहीं का यहीं लोड हो गया, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव टू इट। तो ये तो हमारा बन गया। अब ये सब गड़बड़ हो गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में फिक्स करूँ। अंडू कर दीजिए सर। हाँ, बट अंडू भी नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, इट इज नो प्रॉब्लम, आई विल अनसेव दिस फाइल, डोंट सेव। ठीक है, नाउ टॉप शेयरिंग हो गया। हाँ, stop, I have stopped sharing the screen. Okay. Now what I wanted to show you in Power Query is, now should I do it now or shall we do it on Monday? I want to go with everyone. ठीक है, तो whatever votes I will get accordingly will do. आप लोग को अभी करना है पावर क्वेरी का कुछ एक छोटा सा इलस्ट्रेशन, या यू वांट टू डू इट ऑन मंडे? यू कैन राइट मंडे और राइट नाउ व्हाटएवर मंडे। Sir, better keep it for Monday. नो Yeah, वरी। let's keep on Monday because fresh mind and a fresh thing. Yeah. So I don't want to rush.